Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Nashtike Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. So let me share my screen. And last time we covered Canto 1, Chapter 3, verse 40, 40th or 41st, I am not sure. Because Prabhuji, we did 40th and then we have to start with 41st today. 41st, okay. Thank you so much, Prabhuji. Okay. So you can raise your hands. I'm going to recite this shlok and then the coming shlok, you can raise your hands and you can recite, okay? So Canto 1, Chapter 3, verse 41st. तदिदं ग्राहयामास सुतमात्मवताम्बरम् सर्ववेदे हितासानां सारं सारं समृद्धृतम्. Translation: Sri Vyasadeva delivered it to his son, who is the most respected among the self-realized, after extracting the cream of all Vedic literatures and histories of the universe. So Vyasadeva delivered what? Śrīmad Bhāgavatam to his son. Who is his son? Sukadeva Goswami. Let's see the purport by His Divine Grace, Sri Bhaktivedanta Swami Sri Prabhupada Ki Jai. Men with a poor fund of knowledge only accept the history of the world from the time of Buddha or since 600 BC. And prior to this period, all histories mentioned in the scriptures are calculated by them to be only imaginary stories. That is not a fact. All the stories mentioned in the Puran and Mahabharata, etc., are actual histories not only of this planet, but also of millions of other planets within the universe. Sometimes the history of planets beyond this world appears to such men to be unbelievable. For instance, when I started reading Bhagavatam, and then I got to know the time frame. Okay, there are 14 Manus and Swayambhu Manu, and this is the time period of Priyavrat Maharaj, and this is the time frame. So I was a bit confused because it was not adding up. So I checked with one of the senior devotees. I asked them that, Prabhu, this is my confusion, that I am adding up the calculation and it's not adding up. So he replied, he told me, because you are considering only one universe while adding. The stories, as Prabhupada writes here, is not only of one universe. So, Śrīmad Bhāgavatam, the 18,000 verses that we have today, Ved Vyas has taken the best stories of the devotees from different planets, from different universes, and different time frames. And then the best that he could give us, which can help us go back to Krishna, he has presented in this literature or scripture called Śrīmad Bhāgavatam. That is why this is beyond logic. And when we will study the 5th canto, it will be very interesting, because then we'll try to understand Kal, the time, and how minute it can go, and how interesting it is when we connect it with some other parallel universes and all those things. Yeah. So yeah, all these stories are from different universes as well. Sometimes the history of planets beyond this world appears to such men to be unbelievable. But they do not know that different planets are not equal in all respects, and that therefore some of the historical facts derived from other planets do not correspond with the experience of this planet. Considering the different situation of different planets and also time and circumstances, there is nothing wonderful in the stories of the Puranas, nor are they imaginary. So when it is said there is nothing wonderful, meaning that it is an ordinary thing. For instance, if a man flies today, we will say, oh, it is wonderful. But in the different yugas, or if we go to Swargalok, if someone flies in the air, it is not wonderful. It is like an ordinary thing. Everyone can do that, isn't it? So that is why these stories of Bhagavatam, they are just
For that reference, it's not very wonderful. It's like, okay, it is understood that all these things actually used to happen. It was part of the Vedic and Vaishnav culture. We should always remember the maxim that one man's food is another man's poison. We should not therefore reject the stories and histories of the Puran as imaginary. The great rishis like Vyas had no business putting some imaginary stories in their literature. Now, why is Prabhupada writing this? Because there is a misconception in society that Ved is authentic, then the expansion of Ved, they are also authentic. Ishopanishad and all the Upanishad, they are authentic. But the misconception is that the Puran are imaginary. That all these stories that we read in Puran, like Shiva Puran or that is Linga Puran, and then Brahma Vaivara Puran and Padma Puran, Skanda Puran, these are all fictitious stories and these are not actually authoritative. This is a big misconception. That is not the case. All these stories, pastimes, written in all the Puranas are authentic. Why? Because Ved Vyas has compiled them. And Ved Vyas was sitting in trance. He was looking at what's happening. And as we look at, let's say, we watch a movie and then we are asked to make notes. This is exactly what Ved Vyas did. Okay? So these are not fictitious. Never be under this misconception. In the Śrīmad Bhāgavatam, historical facts selected from the histories of different planets have been depicted. It is therefore accepted by all the spiritual authorities as the Mahapuran. The special significance of these histories is that they are all connected with activities of the Lord in a different time and atmosphere. Srila Sukadeva Goswami is the topmost personality of all the self-realized souls, and he accepted this as the subject of studies from his father Vyasadeva. Srila Vyasadeva is the great authority, and the subject matter of Śrīmad Bhāgavatam being so important, he delivered the message first to his great son, Srila Sukadeva Goswami. It is compared to the cream of the milk. Vedic literature is like the milk ocean of knowledge. Cream or butter is the most palatable essence of milk, and so also it is Śrīmad Bhāgavatam, for it contains all palatable, instructive and authentic versions of different activities of the Lord and his devotee. There is no gain, however, in accepting the message of Bhagavatam from the unbelievers, atheists, and professional reciters who make a trade of Bhagavatam for the layman. It was delivered to Srila Sukadeva Goswami, and he had nothing to do with the Bhagavat business. He did not have to maintain family expenses by such trade. Śrīmad Bhāgavatam should therefore be received from the representative of Sukadeva, who must be in the renounced order of life without family encumbrance. Milk is undoubtedly very good and nourishing, but when it is touched by the mouth of a snake, it is no longer nourishing. Rather, it becomes a source of death. Similarly, those who are not strictly in the Vaishnava discipline should not make a business of this Bhagavatam and become a cause of spiritual death for so many hearers. In the Bhagavad Gita, the Lord says that the purpose of all the Vedas is to know Him, Lord Krishna, and Śrīmad Bhāgavatam is Lord Shri Krishna himself in the form of recorded knowledge. Therefore, it is the cream of all the Vedas, and it contains all historical facts of all times in relation with Shri Krishna. It is factually the essence of all histories. Okay? So it should be clear that the whole purpose of studying Ved is to know Krishna. Vedashya sarvar aham eva vedyo. 15th chapter, 15th verse, Krishna says, right? Sarvasya chaham hridi sannavishto. So he's saying that I am to be known by studying all the Ved. So if we study Ved and don't know Krishna, then we are not studying Ved at all. And where will we know about Krishna? In Śrīmad Bhāgavatam. Śrīmad Bhāgavatam is the only text written by Ved Vyas after he compiled everything. He didn't mention the childhood pastimes of Krishna. Now, very intimately, he mentioned all the pastimes. And that is why this is the scripture. If we have to know Lord Krishna. Okay. So this is the authenticity of Śrīmad Bhāgavatam. So I was telling in previous class, right, that there was one person who people think that he has written Bhagavatam and not Vyasadeva. His name is actually Vopadev. And some people have misconception that Vopadev has actually written Bhagavatam and not Vyasadeva. But again, that is a misconception in the society. So it's like that Vopadev, he was
I think I'm not too sure about the time frame, but probably let's say 500 or that time period he was born in the Nagar of Maharashtra. He was from Maharashtra and he was a great scholar of Bhagavatam. So he wrote Bhagavatam, like his version of Bhagavatam, and then people mistook it as as thinking that Bhagavatam is actually written by Bhagavatam. And till date, people who are not inclined spiritually think that Bhagavatam is something written by an individual from Maharashtra and not Vyasadeva. Okay, but this Vyasadeva, the Bhagavatam that is written, is the most authentic. And this is how we know we are progressing spiritually, as we discussed in our previous classes. The more we are inclined towards hearing Bhagavatam, the more we are spiritually progressing. This is how we can judge ourselves. Yeah. 42. Do we have a hand up? Yes, Krishna. Hare Krishna. स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रयोपविष्टं गंगायां परितां परमर्षिभिः. Translation. Shukdev Goswami, the son of Vyasadeva, in his turn delivered the Bhagavatam to the great Emperor Parikshit, who sat surrounded by the sages on the bank of the Ganges, awaiting death without taking food or drink. All transcendental messages are received properly in the chain of disciplic succession. This disciplic succession is called parampara. Unless therefore Bhagavatam or any other Vedic literatures are received through the parampara system, the reception of knowledge is not bona fide. Vyasadeva delivered the message to Sukadeva Goswami, and from Sukadeva Goswami, Sud Goswami received the message. One should therefore receive the message of Bhagavatam from Sud Goswami or from his representative and not from any irrelevant interpreter. Emperor Parikshit received the information of his death in time, and he at once left his kingdom and family and sat down on the bank of the Ganges to fast till death. All great sages, rishis, philosophers, mystics, etc. went there due to his imperial position. They offered many suggestions about his immediate duty, and at last it was settled that he would hear from Shukdev Goswami about Lord Krishna. Thus, the Bhagavatam was spoken to him. Sripad Shankaracharya, who preached Mayavad philosophy and stressed the impersonal feature of the Absolute, also recommended that one must take shelter at the lotus feet of Lord Sri Krishna, for there is no hope of gain from debating. Indirectly, Sripad Shankaracharya admitted that what he had preached in the flowery grammatical interpretations of the Vedanta Sutra cannot help one at the time of death. At the critical hour of death, one must recite the names of Govinda, Bhaja Govinda, Mood Mate. This is the recommendation of all great transcendentalists. Shukdev Goswami had long ago stated the same truth, that at the end one must remember Narayan. That is the essence of all spiritual activities. In pursuance of this eternal truth, Śrīmad Bhāgavatam was heard by Emperor Parikshit, and it was recited by the able Sukdev Goswami. And both the speaker and the receiver of the messages of Bhagavatam were duly delivered by the same medium. And trust me, this Bhagavatam, so people don't realize, people think that the people of NASA, the scientists and who do research work, they are so advanced and they are so scholarly. But if we actually read this Bhagavatam, it will blow our mind. It is so technical, it is so very well spoken and arranged actually. This Bhagavatam, this is not something ordinary. You will be amazed that all the subject matters, everything has been touched by Shukdev Goswami. So Vyasdev, because just imagine that the original teacher Vyasdev, who is this Vyasdev? This Vyasdev is not so Vyasdev is a post. Vyasdev is a person. Like you and I can become Vyasdev in the coming in the coming change. But this Vyasdev who has written this Bhagavatam is Lord Krishna himself. He's Narayan himself actually. So how knowledgeable that person must be. And then he told this Bhagavatam to Sukdev Goswami. And as I said, it has all the subject matters. You take physics, you take geography, you take history, you take grammar, you take anything, and you will find that in Bhagavatam. It's just that we must be really interested and enthusiastic to study all these things.
if we are a good student of Bhagavatam, the Bhagavatam has so much to offer us. We are going to enjoy this journey of Śrīmad Bhagavatam. Okay? So the story, we all know that Parikshit Maharaj, he was cursed that he's going to die in 7 days. He goes to the bank of river Ganga and then he asks all the devotees, all the sages, what should a dying man do? And then finally it is agreed upon that a dying person should hear the Krishna Katha, because Antakale cha mameva smaran muktva kalevaram. Right? Krishna says 8.5 Bhagavad Gita that in the end, if you remember me, you come back to me. Yasayati samadbhava nastyatra sanshaya. That there is no sanshaya, there is no doubt that you will come to me if you remember me. How will we remember Krishna? By hearing about him at the end of our life. And what is that hearing of Krishna? That is Śrīmad Bhāgavatam. How many days Parikshit Maharaj had before he could die? He had 7 days to live, right? We have 7 days to live. That means Parikshit Maharaj was dying in 7 days and we are also dying in 7 days. So it's the same situation, isn't it? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. 7 days. We are living 7 days. We have to die in 7 days. Parikshit Maharaj same, and Parikshit Maharaj was sure to die. We are also sure to die. So we are in the same boat. We are in the same situation. It's just that like Parikshit Maharaj, he gave up his eating, his sleeping. So similarly, we have to have that enthusiasm that yes, we have to do this every day. Nityam Bhagavata Sevaya. And everyone who's attending Mangal Aarti here, that is why Prabhupada had this program of Mangal Aarti. Morning program means that you must hear Bhagavatam every day. Now we don't have that liberty of having Bhagavatam plus 1 hour a day as Prabhupada wanted us to, but at least we are doing like 15 minutes to 30 minutes every single day in the morning. So this is how we are supposed, because what if I die tomorrow? What if you die tomorrow? Then you did not do Nityam Bhagavat Sevya, right? We have to do this. And even if you miss Mangal Aarti, make it a point, make it a habit that you read Bhagavatam at least 1 verse a day, 1 verse. And if you are new to Bhakti, if you are like in your teens and if you are very recent, so you start with Bhagavad Gita. Read at least 1 slok of Bhagavad Gita a day and then slowly advance to the level of Bhagavatam. Okay? So yeah, Parikshit Maharaj gathered everyone and then Shukdev Goswami comes and Shukdev Goswami then starts narrating Śrīmad Bhāgavatam. 43rd verse. Yes, okay, so let Prabhu. me... Okay, yeah. You are on Is mute. someone... Oh, sorry. कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानाब्धिः सह कलौ नष्टदृशम् एष पुराणार्को दुनोदितः. Translation: This Bhagavad Puran is as brilliant as the sun, and it has arisen just after the departure of Lord Krishna to his own abode, accompanied by religion, knowledge, etc. Persons who have lost their vision due to the dense darkness of ignorance in the age of Kali shall get light from this Puran. Thank you, Prabhu. Lord Shri Krishna has his eternal dham or abode where he eternally enjoys himself with his eternal associates in paraphernalia. And his eternal abode is a manifestation of his internal energy, whereas the material world is a manifestation of his external energy. Okay? So by this must be clear. By now, this must be clear that the external energy is Mahamaya or Durga Devi, who governs, who rules the material world, the world where we are situated right now. That is governed by Mahamaya or Mother Durga. And the spiritual world, Adhyatmic world, is governed by internal potency. That is Subhadra Devi, Yogamaya. Okay? The contrast is that Mahamaya, Durga Devi, she tests us to go back to Krishna. So in our bhakti, she will test us. And on the other hand, Subhadra Devi, she is going to pull us up. If we are slightly deviating from the path of bhakti, she will do just the opposite of Mahamaya and she will pull us up in bhakti. That is the difference. So it's very difficult here to do bhakti, and in the spiritual world it's very easy to do bhakti. Okay? So this must be clear. This concept must be clear to everyone by now. So when he descends to the material world, he displays himself with all paraphernalia in his internal potency, which is called Atma Maya.
In the Bhagavad Gita, the Lord says that he descends by his own potency, Atmamaya. His form, name, fame, paraphernalia, abode, etc. are not therefore creations of matter. Okay? So what is paraphernalia? So anything that God has, like the Sudarshan Chakra, his Gada, his flower, everything that he holds or he has, it belongs to him, it is paraphernalia. Okay? So they are not actually material. Everything is spiritual. And we discussed this, that this lotus flower is not material. Lotus flower is coming from Golok Vrindavan Dham. It is available in Golok Vrindavan Dham, and the whole Vrindavan Dham, the original Golok Vrindavan Dham, is in shape of a lotus flower. Okay? And that is why Lord Krishna or Lord Vishnu, Lord Ramchandra, Narayan Tattva is always compared with lotus. Lotus eyes, lotus hand, lotus feet, lotus face. Why? Because this lotus is not material. It is completely spiritual. Okay? So he descends to reclaim the fallen souls and to re-establish courts of religion which are directly enacted by him. Except for God, no one can establish the principles of religion. Either he or a suitable person empowered by him can dictate the courts of religion. Real religion means to know God, our relation with him, or our duties in relation with him, and to know ultimately our destination after leaving this material body. The conditioned souls who are entrapped by the material energy hardly know all these principles of life. Most of them are like animals engaged in eating, sleeping, fearing, and mating. They are mostly engaged in sense enjoyment under the pretension of religiosity, knowledge, or salvation. Okay, so today in the morning class, we covered this topic, that these four things, eating, sleeping, mating, and defending, is common across all the species. Men, animal, they all do these four things. Eating, sleeping, mating means family life, getting married, having kids, and defending means going to work, financial stability, stock, whatever it is, like investment, all these things are defending yourself. So these four things are common. So remember these things, right? These are the basics of our spiritual foundation. And when men, humans, they go a step above this. So until human is only doing these four things, they are just called a social animal. They are two-legged animal. But when a human starts inquiring about themselves, Athato Brahma Jigyasa, who am I? Who is God? What is my relationship with God? What am I supposed to do? What happens when I die? All these things, when a human becomes curious and he sets on this path of spiritual journey to know, then he actually becomes human. Athato Brahma Jigyasa. This is the beginning of human life actually, okay? So understand the difference between man and animal, okay? So they are mostly engaged in sense enjoyment under the pretension of religiosity, knowledge, or salvation. They are still more blind in the present age of Khodal or Kali Yuga. In the Kali Yuga, the population is just a royal addition of the animals. Now, again, one very important thing. They are still more blind in the present age of Quarrel or Kali Yuga. What does this mean? This means that now that you and I know that there are four regulative principles of no meat eating, no intoxication, no illicit relation, and no gambling, we all know. And we will forbid all these things, right? I am not going to break these four principles. And Kali Yuga is very smart. Don't think that Kali Yuga doesn't know. He knows that these ISKCON people, they have known the truth now. They are not going to do these four things. But he is so sharp-minded and so subtle that he is going to test us with quarrel. Kali Yuga means to quarrel. And that is why you will see that there is quarrel among the devotee community. We have all experienced, right? That Prabhuji said something, that Mataji said something, there was this gossiping, this happened, that happened, and then we say we are not going to temple anymore. Oh, this is bad association. Let's be at our home and do our chanting, and let's never go to temple. Let's never associate with the devotees. So understand, when we have this bhav, this is Kali Yuga. Just understand it. It is not that Prabhuji said something to you or that Mataji said something to me. No. It is Kali Yuga.
making them a medium, and he's breaking us. Why? Because he knows that they are not going to do this for mischief. But somehow he has to trap us, isn't it? Because he's smart. So understand that whenever this is happening, we have to take more shelter of the devotees. We have to take more shelter of the temple. Because Kali Yuga means Kala, quarrel. And this is exactly what he will do. Every time he will do, and he will not leave us until we have become pure devotees. Okay? So, So another relationship with this is, in that situation, what we need to do? Kala. In Kalaha, we have to become Yudhishthir. Yudhishthir, what does Yudhishthir means? It means that someone who can become very calm and composed in a quarrelsome situation. Okay, Yuddha means quarrel, fight, war, and Sthir means to be equipoised, very calm, very composed, don't react, take your time, and then you judge the situation and act accordingly. This is the definition of Yudhishthir. Okay? And Krishna was on the side of Yudhishthir Maharaj. Yudhishthir Maharaj was the king of the Pandavas, isn't it? Why? Because of this quality. And that is how he got the name Yudhishthir. Every day of our life is a war. Remember this. Every day when we wake up, we are going on a war. Who are our enemies? Lust, anger, greed, pride, illusion, envy, Kali Yuga, and Maya Devi is there to test us overall. Okay? So these are our enemy. We are going on war. In that situation, Kali Yuga is going to trigger us. He knows where to trigger which devotee. A devotee, okay, he overeats, give him more to eat. Oh, he sleeps, okay, give him more to sleep. He will sleep during Mangal Aarti. This devotee is not interested in reading Shastras. This devotee is always gossiping. So he knows how to keep devotees away. But we have to always come back to becoming Yudhishthir. That we have to become very calm and composed in these situations when they trouble us, and just come in devotee association and do our sadhana properly. Okay? So, remember our takeaway for today's class. They have nothing to do with spiritual knowledge or godly religious. Okay, so in the Kali Yuga, the population is just a royal addition to the animals. They have nothing to do with spiritual knowledge or godly religious life. They are so blind that they cannot see anything beyond the jurisdiction of the subtle mind, intelligence, or ego. But they are very much proud of their advancement in knowledge, science, and material prosperity. They can risk their lives to become a dog or hog just after leaving the present body, for they have completely lost sight of the ultimate aim of life. The personality of Godhead Sri Krishna appeared before us just a little prior to the beginning of Kali Yuga, and he returns to his eternal home practically at the commencement of Kali Yuga. Now, when Prabhupada says that they are ready to become hogs and dogs, what does it mean? It means that even after knowing everything, Ajamil or Bharat Maharaj, they had all the knowledge. They both were self-realized. Ajamil knew everything. He was a Naishtik Brahmachari. Bharat Maharaj, the son of Rishabdev, he had all the knowledge because his father is Krishna. Rishabdev was Krishna himself, and his son, who was the ruler of the complete world. And what happened to both of them? Both of them got entangled. Ajamil saw something in the forest he shouldn't have. It was not his mistake. He was going on the orders of his father to the forest, and he saw something and it went downhill from there. Bharat Maharaj, he was going to the forest, and there was a shooter who shot the mother deer, and then the baby deer came because she was pregnant, and then he got attached to the baby deer, and both of them had a fall down, right? So understand that we should always be very careful that no matter however safe we think we are, we can fall at any time, because these people of Bhagavatam, they are not ordinary people. Son of Krishna, Bharat Maharaj, Ajamil, a Naishtik Brahmachari from his last life, previous life, if they can fall down, then can't we fall down? So that is why we have to be very careful at each and every walk of our life. Because when things come, it will be bewildering to us in such a way that we won't even realize until many lifetimes has passed away. Okay? So while he was present, he exhibited everything by his different activities. He spoke the Bhagavad Gita specifically and eradicated all pretentious principles of religiosity.
And prior to his departure from this material world, he empowered Sri Vyasdev through Narad to compile the messages of the Śrīmad Bhāgavatam. And thus both the Bhagavad Gita and the Śrīmad Bhāgavatam are like torch bearers for the blind people of this age. In other words, if men in this age of Kali want to see the real light of life, they must take to these two books only, and their aim of life will be fulfilled. So if we have to study, please make it a point. Study Bhagavad Gita and Bhagavatam. And don't read it, study it. Make notes. You should be knowing everything about everything of Bhagavad Gita and Śrīmad Bhāgavatam. And this is what my Guru Maharaj told me, that it will take you a lifetime to actually read these books. Because I told you, right, I wanted to read this different Quran and different literatures. But Guru Maharaj just smiled and he said that it is going to take you a lifetime to read these Prabhupada books, so you won't get time. Because this Bhagavatam is, honestly, it's very interesting. The more you dive into it, like Jyotish Shastra and everything, actually you can relate to Śrīmad Bhāgavatam. And you will be amazed to know the position of the stars and everything. And how could Shukdev Goswami, who is a complete renunciate, he's speaking about all these subject matters. It's more interesting actually. So yeah, Bhagavad Gita is the preliminary study of the Bhagavatam, and Śrīmad Bhāgavatam is the summum bonum of life. Lord Shri Krishna personified. We must therefore accept Śrīmad Bhāgavatam as the direct representation of Lord Krishna. One who can see Śrīmad Bhāgavatam can see also Lord Shri Krishna in person. They are identical. Okay? So if we have to see Krishna, read Bhagavatam, study Bhagavatam, hear Bhagavatam. 44. Do we have a hand, Prabhu? I'll listen, Prabhu. Yes. Tatra kritayato viprarse puri tejasa aham chadayagamam tatra nivistastat anugrahat soham va pravavishyami yatam mati. Translation. O learned Brahmanas, when Sukadeva Goswami recited Bhagavatam there, in the presence of Emperor Parikshit, I heard him with rapt attention, and thus, by his mercy, I learned the Bhagavatam from that great and powerful sage. Now I shall try to make you hear the very same thing as I learned it from him and as I have realized it. Wow. So Yash Prabhu and Manoj Prabhu, it feels like this is the first batch of Bhagavad Gita because these both were in the first batch. So anyways, Manoj Prabhu, who is speaking this verse? Do you know? I learned Sukadeva Goswami. So who was in the audience of Shukdev Goswami when he was speaking? Sukadeva Goswami spoke to Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj, yes. And there were 88,000 sages, okay, in Naimisharanya. But there was another person who was sitting besides Parikshit Maharaj and he is saying this. Can you guess who was that? Is it Suta Goswami, yes. Very nice. Yeah. So when Sukdev Goswami was reciting Bhagavatam to Parikshit Maharaj, he asked Parikshit Maharaj and Suta Goswami, both of them, to sit in front of him. And then all the audiences, they were sitting behind these two individuals. Because Suta Goswami was the next in line, because this is Guru Shishya Parampara, right? So Vyasdev taught this to Sukdev Goswami taught it to Suta Goswami, and then Suta Goswami is teaching it to the Sanakadi Rishis. And with him, due to that teaching, we are all getting the knowledge. So this is the flow of Bhagavatam, the Guru Shishya Parampara. One can certainly see directly the presence of Lord Shri Krishna in the pages of Bhagavatam if one has heard it from a self-realized great soul like Shukdev Goswami. One cannot, however, learn Bhagavatam from a bogus hired reciter whose aim of life is to earn some money out of such recitation and employ the earning in sex indulgence. No one can learn Śrīmad Bhāgavatam who is associated with persons engaged in sex life. That is the secret of learning Bhagavatam. Nor can one learn Bhagavatam from one who interprets the text by his mundane scholarship. Okay? So two very important things. In one of Bhagavad Gita classes, I told this, right?
that indulgence in sex life means to compete with Krishna. It means that we are still trying to become Krishna. Bhoktaram yajna tapasam sarva loka maheshwaram suhridam sarva bhutanam gyatva mam shanti vrichyati. So Krishna is saying, I am the benefactor. I am the God actually. But we are competing. Why? Because everything is for the satisfaction of Krishna. But here we are trying to enjoy. Because the whole concept of this material world is the attraction between men and women. Isn't it? And that is how we have to come out of here. When Prabhupada was asked that, Prabhupada, what is this purity inside you? Wherever you walk, the whole room lights up. You have a different glow, effulgence in your face. What is your secret? And straight away, Prabhupada said that I am not addicted to sex life. This is the reason. And the more we are away, and this will come actually, the more sincerely we chant, the more sincerely we try to hear Bhagavatam every day, like one slok. Never miss a single day where you have not read a single slok. Just make it a point. And your 16 rounds, your 4 regulative principles, devotee association, everything. If you do this, then take my words, a time will come where you will be no more attracted towards the opposite sex. Okay, and that is very, very important because sex and spirituality, they cannot go parallel. They cannot go hand in hand. We will have to give up one. Either we give up our sense gratification or we give up our spiritual life. Now we have to choose. Lifetime after lifetime, we have given up spiritual life and we have danced to the tune of Maya Devi. But one life, just one life. And even if we cannot do this, let's say it's very difficult for us to give us the sense enjoyment. And it is difficult because we have been doing this for our millions and millions of lifetimes. So what do we do in this situation? We pray helplessly to Krishna like Draupadi did. She raised both her hands and she prayed to Krishna, save me. Similarly, we have to actually pray to Krishna to save. And then I heard in one of the lectures that if we take the name of these 5 individuals, that is actually going to help us to retain our, brahmacharya. So let me see if I remember these 5 personalities. Lord Hanuman, Bhishma Pitama, Shukdev Goswami, Chatush Kumar. Did I say Bhishma Pitama already? Did I say right? And Narad Muni. Did I say Narad Muni? Can someone recall? So Hanumanji, Narad Muni, Sanat Kumar, Bhishma Pitama, and what was the 5th? You mentioned Sukhdev Goswami, Prabhuji. Sukhdev Goswami, thank you so much. Yes, Sukhdev Goswami. So I heard somewhere, don't know the authenticity, but I heard somewhere that if every day in the morning we take blessings of these 5 Naishtik Brahmacharis, so this will help us actually to remain away from all these sense gratificatory thoughts. So that is very important. The first thing, okay? And the second thing is that we should always hear Bhagavatam from a bona fide speaker. Okay? Meaning that who is in Guru Shishya Parampara and who is not reciting Bhagavatam for money's sake. That is the correct source of Bhagavatam, because now it is a business, you know. You will see big billboards actually if you go to Vrindavan or any other part, and then you'll have to pay to be sitting in those classes, right? So yeah, if they are doing like good work, like making a cow shelter out of it, then that is fine. But you have to be very, very careful. Who are we listening from? Because let's say, if I am giving you a discourse and I myself am not attending Mangalarti, I am not chanting my round, I am not having proper dealings with the devotees, and I am myself not following the rules and regulations and breaking the rules, then it is just a waste of time. I am cheating you, and unfortunately you are being cheated. It's just a waste of time. That is why you have to be very careful who you give your time to, because this time is very precious. Like I said, we are all dying in 7 days. So our time is very precious. Okay? So yeah, that is the catch here.
One has to learn Bhagavatam from the representative of Sukadeva Goswami, and no one else, if at all, wants us to see Lord Krishna in the pages. Krishna will come. This is guarantee. And I have no doubt, like not a tinge of doubt, when in the second verse of Bhagavatam it is said, Dharma prochtikai tavotra parmo nirmat charana sakam, right? And the last word says, Shushrushobi takshanat. So Shushrushobi takshanat means that whoever Śrīmad Bhāgavate Mahamuni Krite Kimva Pararishvare. So this Bhagavatam written by Sri Mahakavi Vyasadeva, what is the use of reading any other scripture? And whoever does this with rapt attention, hear Bhagavatam, study Bhagavatam, then what is going to happen? They are going to see Krishna face to face in this lifetime. Be convinced of it. So if you really want to see Krishna, give it everything so that you can hear Bhagavatam. Yeah? So that is the process. Sud Goswami is a bona fide representative of Sukadeva Goswami because he wants to present a message which he received from the great learned Brahman. Sukadeva Goswami presented Bhagavatam as he heard it from his great father, and so also Sud Goswami is presenting Bhagavatam, so he had heard it from Sukadeva Goswami. Simple hearing is not all. One must realize the text with proper attention. The word nivishta means that Sud Goswami drank the juice of Bhagavatam through his ears. Pivat Bhagavatam Rasamalayam. Right? The third verse of Bhagavatam. Nigama kalpatarol galitam phalam. So in that verse, the third line is Pibata Bhagavatam Rasamalayam. That drink, and Vyasadeva is not requesting that please drink. No, he is ordering who? All of us. He is ordering all of us, instructing all of us that drink. Like, the grandfather, grandmother, they will not order. They will get a milk of glass and they will come and they will say the grandchild, drink it, like an order. So this is the order given by Vedas to all of us, that drink this nectar, and that too every day. Okay, so the word nivishta through his, so Bhagavatam has to be drank as juice. That is the real process of receiving Bhagavatam. One should hear with rapt attention from the real person, and then he can at once realize the presence of Lord Krishna in every page. Now, if you cannot find this real person, you be this real person. Okay? Like you are struggling to find, if you can't find any one person in Ireland, who you think, I'm just making this up, okay? That let's say you are saying that I am in a remote village of Ireland. Let's say you are in, I don't know, Kerry, Limerick, whatever place it is, and you cannot find a single person who you can study Bhagavatam from, then you become that person. You take your beats, you start chanting 16 rounds very attentively. You take Śrīmad Bhāgavatam, you start reading Bhāgavatam very scrupulously, and you will see, you will become that person and you will be the torch bearer for others. Okay, so the change starts from us. We all have to aspire actually to become Bhagavat in our life. Prabhupada would say, the disciples would say, Prabhupada, we cannot do this. Why you cannot do this? I can do this. Prabhupada, but you are a pure soul. Why are you not a pure soul? Prabhupada would chastise like this. Why are you not a pure soul? What is stopping you to become a pure soul? Right? Why can't you become a good devotee? So give it all. Just one life give to Krishna. That's it. One life, that's all. 60 years of your time you give to Krishna, and this is the best bargain. You have no idea. Neha vikramana shosti pratyavayu na vidyate svalpamapyasya dharmasya trayate mahato bhayat. 240 Bhagavad Gita. It is going to save you from the greatest of the danger. This bhakti process. Okay? The secret of knowing Bhagavatam is mentioned here. So we can know Bhagavatam only through by ears, by hearing. No one can give rapt attention who is not pure in mind. No one can be pure in mind who is not pure in action. No one can be pure in action who is not pure in eating, sleeping, hearing and mating. But somehow or other, if someone hears with rapt attention from the right person at the very beginning, one can assuredly see Lord Shri Krishna in person in the pages of Bhagavatam. Okay? So eating, sleeping, mating and defending has to be pure. Means it has to be regulated. Wake up for Mangalarti. Don't overeat. Don't be too much attached to your family life, and don't overwork. Right?
Work in a way that you can do your sadhana very properly, because see, this is our real wealth. The package that I get, whatever it could be, that is not my real wealth. That is my material wealth. If you ask me how much I earn, I should tell you, I take 100,000, or I think if I'm chanting 16 rounds a day, that is 1 crore. 1 crore is how much? 10 million. So my package is actually 10 million Krishna Naam a year. That is my package. Okay. This is my real wealth that is going to me after I die. The money that I am earning, the salary, the bonus, whatever it is, that is not my real wealth. That is just so that I can keep my soul and my body together. And the purpose is so that I can do my bhajan properly. Okay. So if this eating, sleeping, mating and defending is not pure, then what's happening is that we cannot be pure in our action. And if our action is not pure, then our mind won't be pure. And if our mind is not pure, then we are not going to have rapt attention while hearing Bhagavatam. It's the same story, Dhruv Maharaj, Prahlad Maharaj. But tell me something, let's say your brother or your sister, they get Oscar award, or they get a gold medal in Olympics, or they get a Nobel Prize. Okay, let's say Manoj Prabhu has a brother who got a Nobel Prize. Now, whenever someone comes to the house of Manoj Prabhu's father and mother, and Manoj Prabhu is going to talk about that Nobel Prize, isn't it? That look at my brother, he got a Nobel Prize. That will be slipped in the conversation. 5 minutes down the line, it will be, yeah, he got a Nobel Prize. Do you think if someone comes and repeatedly tells the mother of Manoj Prabhu, oh, you know what, that your son got a Nobel Prize. So will the mother say, oh, enough, I am fed up with this topic. I know he got it. It was in front of me. No, the mother is never going to say that. The mother will always say, oh, you know, how do you know? Where did you hear it from? Oh, tell me more about it. What are people saying about my kid? What is this? So she will be so much interested, isn't it? That is the level of interest we should be having when we read Śrīmad Bhāgavatam. It should not be that, oh, every year Narsimha Chaturdashi is coming, we know. What? Same old story. Prahlad Maharaj, tortured by father, Narsimha Dev coming, killing the father, and then happy ending, right? And the same story with Dhruv Maharaj, the same story with the gopis, everything. No. If this is the attitude, then it means that we are lacking bhakti somewhere. We have to be enthusiastic that, okay, tell me more. What happened actually? Oh, really? This is how Narsimhadev came? Oh, this is how he fought with Hiranyakashipu. This is how he garlanded himself. So we have to be curious. And the more pure we are with our mind, action, thoughts, and these regulated principles, the more we will be able to understand Śrīmad Bhāgavatam and relish Śrīmad Bhāgavatam. Okay, and I'm going to give you another very important verse actually. So, page 7.28. Let's see. Yeah. Persons who have acted piously in previous lives and in this life, and whose sinful actions are completely eradicated, are freed from the dualities of delusion, and they engage themselves in my service with determination. What does this mean? So now you may think that Prabhuji is saying, he's screaming for last 1 hour that read Bhagavatam, study Bhagavatam, hear Bhagavatam. But I have noticed, right? Or all the gurus of ISKCON, they are saying chant 16 rounds, wake up for Mangalarti, but we are not able to do. We know that we have to do, but we are not able to do. Why? This is the answer why. Krishna is saying that persons who have acted piously in previous lives and in this life, and whose sinful actions are completely eradicated, are freed from the dualities of delusion, and they engage themselves in my service with determination. Mangalarti, chanting 16 rounds, sadhana, service in the temple, Bhagavatam class, all these things are service to Krishna actually. Right? Nityam Bhagavata Sevaya. Who is Bhagavat? Krishna is Bhagavat. And we are doing his service, Sevaya. So why is it that we are not getting test? This is the answer. That we still have impious activities remaining from our past life and in this life. That is why we have no taste in Bhagavatam. That is why we have no taste in Mangalarti. That is why we have no taste in chanting. This is the reason. So what to do then? Shall we just wait?
that okay, when our past life's karma and my present life karma is going to be over, then we will go in bhakti. No, that is never going to happen. The only thing that is going to help with this verse is mercy of Krishna. And when will mercy flow? Mercy will flow when Krishna sees that he or she is endeavoring every single day. Every day it is difficult for them to wake up, but they are waking somehow. Every day it is very difficult for them to chant their 16 rounds, but somehow, even when they are sick, they are chanting their 16 rounds. They have so much problem in the temple. Devotees are saying so many bad things about this devotee, but still he is going for doing seva in the temple, isn't it? He is not saying that I am not going to do this seva. Why? Because the devotees are making fun of me, or this is happening, that is happening. He doesn't want to come to the Bhagavatam class. He wants to go out with his friends for swimming in the ocean or whatever it could be. But still he is sitting in Bhagavatam class, right? So when Krishna sees this level of dedication, then immediately there is going to be mercy that will flow. And when the mercy flows, all our present and past karmas are gone. Now the only karma that is remaining and that is stopping us to go back to Golok Vrindavan Dham is our future karma. So you and I, if we are sitting on this call and hearing Bhagavatam, that means our past and present karmas are zero. That is why we are hearing Bhagavatam. But why are we still not going to Krishna Lok? Because our future karma is still pending. Because every time we are chanting, we are thinking, we have thoughts. Oh, let me get this job. Let me get this girl as my wife. Let me get this. Let me get that. So what is happening is, with each thought, we are creating one life. And that is why it is taking long for us to go back to Krishna Lok. Because now those things have to be nullified without chanting. That is why when we are chanting, what this Prabhupada is saying? Attentive chanting. You chant and you hear. This is what Guru Maharaj would say. When I was getting initiated, I asked Guru Maharaj, any service for me, Maharaj? He said, attentive chanting and read Prabhupada books every day. If we hear, this is like very simple, isn't it? Arey, isme kya hai? This is like for everyone. Everyone knows this is it. But are we actually, till date I am not able to do that. I can confess I cannot chant attentively. Because there are so many thoughts and I am creating so many lifetimes actually. So understand this science, that this is how it works actually. Our whole focus should be that we have to have taste in Śrīmad Bhāgavatam. This is the only thing that is going to take us back to Krishna Lok. Okay? So we have completed the 3rd chapter of Śrīmad Bhāgavatam. Now we will move to the 4th chapter of Śrīmad Bhāgavatam. I am going to stop here and open the floor for question and answer. You can raise your hand and you can ask me. No question? Yes, Mrs. Prabhu. प्रभु जब हम माला पे चैंटिंग करते हैं तो इंडेक्स फिंगर का और वो सब रूल्स होता है, वो आप कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो? Okay, so when we chant, we use our index finger and our thumb. Okay, we never use our first finger. Why? Because first finger is the finger with which we find fault with others. Okay, so that is one of the reasons why we don't use the first finger. And the second reason is that the index finger and our thumb, when it connects with the bead, there is a nerve that goes directly to our brain and it calms and soothes our brain. ठीक है? जिस तरीके से मंत्र का क्या मतलब होता है? मंत्र मीन्स मंत्राय इति. Something that controls your mind is called mantra. Okay? And when the index finger is pressed with the thumb, it actually sends a signal to the mind, to the brain, and it controls. So that is also scientifically, that is the reason कि यही दो उंगली हम क्यों यूज करते हैं while chanting mantra. Is that clear, Prabhu? Yes, thanks. Okay, Hare Krishna. Yes, Krishna Mata ji. हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा सवाल शायद आज के सेशन के रिलेटेड ना हो, बट इट्स जस्ट अ जनरल क्वेश्चन मेरी. मतलब हम लोग हमेशा सुनते हैं कि 100% समर्पण करना है, बट वो कैसे किया जाता है? आई मीन दैट इज रियली समथिंग डिफिकल्ट, इवन इफ वी थिंक
मैं ये भी सोचती हूँ कि आज एक दिन मैं ट्राई करूंगी, बट वो नहीं पॉसिबल है. सो नहीं है। हाउ टू रियली अचीव दैट? ये सोचना बेवकूफी है, हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। भगवान Okay. भगवान 3.21 भगवद गीता 3rd chapter 21st text he says, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, meaning that ahankar vash out of false ego we think that we are the doer. Okay. तो हम कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। हम बस इच्छा कर सकते, ठीक है। मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं 192 राउंड या 64 राउंड में नहीं जप सकता हूँ, मैं इच्छा कर सकता हूँ कि मुझे करना है भगवान। Okay. एंड देन कृष्णा विल टेक अ कॉल, ठीक है इसको करने देते हैं क्योंकि वाकई में करना चाहता है, Okay. ठीक है। तो Okay. जो पूर्ण समर्पण है माता जी, वी कांट डू एक्चुअली, वी कैन ओनली ट्राई, वी कैन ओनली डिजायर। एंड व्हेन कृष्णा डिसाइड्स, आप Okay. क्यों आज भक्ति में, क्यों आप मंदिर में आ रहे हो, आपके दम पे नहीं जा रहे हो आप, कृष्णा ने आपको चूज किया कि आप मंदिर में आओ, इसलिए आप जा रहे हो, इसलिए मैं जा रहा हूँ, Okay. ठीक है। हाँ, Okay. आप देखेंगे एक चीज, मैं बस एक चीज बोलूंगा सबके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप वैष्णव अपराध करते हैं ना, किसी के प्रति अपराध करते हैं, कुछ बोलते हैं, गॉसिप करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप कभी ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो साधना होगी ना वो नीचे चली जाएगी। जैसे मान लीजिए आप सुबह उठ के 16 माला कर पाते थे, या फिर आप बहुत ध्यान पूर्वक जप कर पाते थे, अब वो आपसे नहीं होगा और हमको पता नहीं चलता, हमको फर्क भी नहीं पड़ता। हमको है कि चलो बस कोटा पूरा करना है ना, 16 माला का कर दिया, खत्म। लेकिन हम कभी इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं कि हमने अपराध किया है और उसके वजह से कृष्ण ने हमारी वो शक्ति छीन ली है कि हम ध्यान पूर्वक जप कर सकें। आप देखिए आपके जीवन में, तब आपको समझ में आएगा कि हम वास्तव में कुछ नहीं कर सकते हैं, सब भगवान की ही देन है हमारे लिए। Okay. कैरी ऑन। But किसी को not as a bhakti point of view, but as a general practical solution, अगर किसी को कुछ point out करे किसी डिवोटी को, is that wrong then? दैट इज नॉट रॉन्ग। नहीं नहीं नहीं, अगर आप देख रहे हैं कि किसी, अगर आप मान लीजिए कि आपके तमन्ना माता जी या खुशी माता जी को आप कुछ करेक्ट करें तो उसमें कुछ गलत नहीं है ना, बिकॉज एज अ मदर यू वांट देम टू ग्रो इन देयर लाइफ, राइट। सो आपका इंटेंशन मैटर्स एक्चुअली। आप उनको सब 4 लोगों के सामने नीचे दिखाने के लिए बोल रहे हो कि तुमको ये करने नहीं आता, देन दैट इज रॉन्ग, ये अपराध है। लेकिन आप वाकई में उनको बोल रहे हो कि भाई तुम सुधरो, तुम करो, तब तब दैट इज नॉट रॉन्ग एंड दैट इज नॉट अपराध। हाँ, मतलब अकेले में किसी डिवोटी को, आई एम नॉट टॉकिंग जी। अबाउट माय डॉटर्स बिकॉज दैट आई नो इज अ मदर, एज अ मदर मेरा फर्ज भी बनता है, बट किसी XYZ डिवोटी को अदर देन लाइक अकेले में बोल बता के कोई चीज समझाना, वो गलत नहीं हो जाता है ना? नहीं गलत है, बिल्कुल नहीं। इस जब साधु संघ बोला जाता है माता जी, साधु संघ क्यों बोला जाता है, इसलिए ना कि एक दूसरे को ऊपर उठाओ, ओके। ठीक है। साधु संघ मतलब ये थोड़े कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, तुम यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, ये नहीं है साधु संघ। उसका मतलब क्या है कि अगर मैं देख रहा हूँ कि चैतन्य प्रभु ढीले पड़ रहे हैं वो अपनी चैंटिंग में, तो मैं जाके उनको बताऊंगा कि प्रभु जी ऐसे करोगे तो क्या फायदा, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, 16 माला तो कर रहे हो बट एक माला का भी फल नहीं मिलेगा आपको, राइट। तब वो समझेंगे ना कि हाँ हाँ प्रभु जी ने बचा ली जिंदगी मेरी। या वो मुझे आके बोल दें कि प्रभु जी आप अगर गुस्सा करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा आपका, तो मैं समझूंगा इस चीज को कि हाँ मुझे नहीं करना है। दिस इज साधु संघ एक्चुअली, ओके ओके प्रभु, है ना जी। ये अमित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू फॉर द लेक्चर। आपने बोला कि जैसे कि Prabhupada used to say, if I am doing it, why are you not doing it? If I can be a pure soul, why can't you be? But Prabhupada की सच में कुछ अलग बात थी, like he was the chosen one to spread the movement and everything, and he was blessed. He was not walking alone. If you actually see the devotees who supported him and the whole movement, there were Rudras also with him who guarded him every now and then. Just like Arjuna and everyone, they were during the whole Mahakurukshetra war. It was not just Krishna standing alone. There were Rudras and also Prabhupada also had this. But if we look at our own self, we don't have that potency, and we are not really that pure internally because we still are dealing with so much. सीक्रेट बताऊं क्या? एक सीक्रेट मैं आपको बताऊंगा और ये डोंट शेयर आउटसाइड, ठीक है। हमको अभी ये पता ही नहीं है कि हम कौन है। हम थियोरेटिकली बस समझते हैं इस बात को कि हम आत्मा हैं। प्रभु आपको जिस दिन अंदर से रियलाइज 1% भी हो जाएगा ना कि आप कौन हो, तब जिस दिन आपकी आंखें खुलेंगी तब ये प्रश्न ही नहीं आएगा, ठीक है।
ठीक है, क्योंकि मैं और आप हम लोग साधारण नहीं हैं। हम बस अभी उस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे हैं। जब हम 16 माला जपते हैं ना, वाकई में अटेंटिवली, सुदर्शन चक्र हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं 360 डिग्री बना के। किसी की भी हिम्मत नहीं है कि भेद दे हमको। हम जो आज मैं और आप जो दुख प्राप्त कर रहे हैं वो हमारे ही प्रारब्ध हैं। मेरे पड़ोसी में या फिर आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आके वो मुझे छू भी दे। मेरे जो प्रारब्ध है ना, उसके वजह से बाजू वाला मुझे गाली देके निकल जाता है या कोई मुझे ठोकर देके निकल जाता है। वो उसमें सामर्थ्य नहीं है, ये मेरे प्रारब्ध है। ठीक है, जब आप आगे बढ़ेंगे ना इसमें भक्ति में, और वाकई में विद एकदम प्योर इंटेंशन कि मुझे बिजनेस नहीं करना है इस्कॉन में आके, मुझे जन्म धनम सुंदरी वाकई में नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ धाम जाना है, मुझे रियलाइज करना है कि मैं कौन हूं, तब आपको समझ में आएगा कि कहां पे जाओगे आप, कि आप इन अ गुड वे में बोल रहा हूँ, डर के नहीं, वाकई में आपको समझ में आएगा कि आप हो कौन। और प्रभु जैसे कि हम लोग, क्योंकि वी आर सो यूज्ड टू ना कि हमें इंपॉर्टेंस नहीं मिलती यहाँ पे। मेरे और आपके लिए मीटिंग चल रही है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, एक एक इंसान के लिए मीटिंग चल रही है वहां पे। कृष्ण और प्रभुपाद बैठ के डिसाइड करते हैं कि अच्छा अब इस भक्त का समय आ गया है, इस पे ऐसी कृपा होगी, इसने ये किया है हमारे लिए, इसने इतने बुक डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, राइट। तो एक एक इंडिविजुअल जो हम लोग है ना, वी आर प्रेशियस एक्चुअली, बट वी डोंट रियलाइज। क्यों? क्योंकि माया में इतने जन्म में इतने लात खाए हैं, इतने लोगों ने हमें इग्नोर किया है, एंड पीपल हैव लेट अस डाउन सो मच। और मतलब कि कहीं से कोई इज्जत नहीं मिले ना, तो हमको लगता है कि हाँ हम भी कॉमन है लोगों की तरह, जैसे बाकी है वैसे हमें। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप खुद अपने जीवन में देखो किस किस तरीके से कृष्ण आके हमको प्रत्यक्ष बचाते हैं। जिन पे भी आपकी श्रद्धा है, जगन्नाथ जी हो गए, राम जी हो गए, कृष्ण हो गए, नरसिंह भगवान हो गए, किस तरीके से हमको उन्होंने बताया है, बचाया है। जब आपको रियल दिखाई जाएगी ना कि देखो यहाँ पर तो तुम फिसल के मर सकते थे, यहाँ पर तो तुमको 1 लाख का जुर्माना लग सकता था, लेकिन भगवान बचाए तुमको। तो अभी हम क्योंकि अज्ञान में है, इस शरीर में ढके हुए हैं, हमको ये सारी चीजें नहीं समझ में आती। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं ये जो भी स्टोरी है ना प्रभु जी भागवतम की, ये सारी स्टोरी मेरी और आपकी पर्सनल स्टोरीज हैं। वो जय और विजय की कथा नहीं है, वो अजामिल की कथा नहीं है, वो मेरी कथा है, अभय गिरिराज की कथा है कि किस तरीके से इस जन्म में तुम ऐसे जंगल में गए थे, तुमने ऐसा दृश्य देखा और तुम ऐसे कर बैठे, और फिर तुमको नया जन्म लेना पड़ गया। लेकिन अब तुम गलती सुधारो, अजामिल की कथा पढ़ो, उसने इस सिचुएशन में क्या किया, तुमने कुछ गलत कर दिया, उसने ऐसा किया और धाम चला गया, राइट। ध्रुव महाराज की कथा ले लो, प्रहलाद महाराज की कथा ले लो, ये मेरी आपकी कथा है, ये उनकी कथा नहीं है। हमको बस रियलाइज करना है प्रभु जी इस चीज को कि कृष्ण वाकई में आज भी ऐसा गीता महात्म्य में बोला गया है कि जहां भी भगवत गीता का पाठ होता है, पढ़ा जाता है, सुना जाता है, डिस्कस किया जाता है, राधा रानी और कृष्ण स्वयं वहां पे खड़े रहते हैं, सुन रहे होते हैं कि क्या बातें चल रही हैं। रामायण जहां बोला जाता है वाकई में वहां पे हनुमान जी होते हैं, जहां पर भी भागवतम बोली जाती है प्रहलाद महाराज वहां पे सुन रहे होते हैं। मुझे और आपको नहीं दिख रहे हैं। प्रभुपाद अगर मेरी जगह बोल रहे होते तो वो बैठ के देखते कि प्रहलाद महाराज को आसन दो, ये बैठे यहाँ पे, राइट। तो प्रभुपाद ने क्यों बोला ऐसा? प्रभुपाद ने इसलिए बोला क्योंकि उनको पता है कि हम लोग साधारण नहीं है। जितने भी लोग जुड़े हैं ना भी प्रभुपाद से, कोई भी साधारण नहीं है। सम रियलाइज इट सून, सम रियलाइज इट लेटर। और आपको, और ये सब अपने, ये जाके सबको मत बोलना, आप अपने जीवन में बहुत लोगों से मिलोगे, बहुत लोगों से जो कि दिव्य पुरुष होंगे। या तो आप स्वप्न में मिलोगे या तो आप साक्षात मिलोगे। कुछ महाराजों की सेवा करने का मौका तो मिला है अब तक, तो मैं उतना तो मानता हूँ कि कृष्णा देख रहे हैं। महाराज तो ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अकल्पनीय है, जो हम बुक्स में जिनके बारे में पढ़ते हैं, उनसे भी आप मिलेंगे इस जीवन में, अगर आप वाकई में अच्छे से साधना कर रहे हैं, अपने गुरु पे पूर्ण रूप से समर्पित हैं। क्योंकि जब अष्ट सिद्धि और ये सारी चीजें बहुत छोटी हो जाती हैं एक भक्त के सामने, आपके पास अष्ट सिद्धि हो गई तो आप बैठे बैठे यहाँ से ब्रह्मलोक का भ्रमण कर लोगे, आप किन पुरुष लोक चले जाओगे, आप अलग अलग जगह घूम के आ जाओगे, बस अष्ट सिद्धि में। आप तो भक्त हैं, आप तो इससे कई ऊपर हैं। इट्स जस्ट दैट कि एक तो दो चीजें, एक तो हमको ही रियलाइज नहीं है, और दूसरा कृष्ण ऊपर से हमको योग माया से ढके रहते हैं कि इसको रियलाइज मत करा दो, नहीं तो उधर ही खेलने लग जाएगा, ये फिर आएगा नहीं मेरे पास, राइट।
तो इसीलिए जो भी वाक्य बोले हैं प्रभुपाद जी ने, वो एकदम बोलते ना कि पत्थर की लकीर है हमारे लिए, कि वो बिल्कुल ट्रू है। अब देखिए, उसी बात को लेकर जो लोग सीरियस हुए कि ओडिशा में जाके मंदिर बनाओ, पता है जब गौर गोविंद महाराज जा रहे थे मंदिर बनाने, कितने लोगों ने उनको बोला कि ये बेवकूफी है, नहीं हो सकता, यहाँ पे भूत प्रेत रहते हैं, ये है वो है, मत करो मत करो। तो गौर गोविंद महाराज ने बोला कि प्रभुपाद ने बोला है तो बोला है, बनेगा यहाँ पे मंदिर, आपको नहीं करना है तो आप मुझे जाने दो, मैं बाजू में मेरा मंदिर बनाऊंगा प्रभुपाद के नाम पे, लेकिन मैं बनाऊंगा क्योंकि बोला है। लगे रहे, आज देखो उड़ीसा भुवनेश्वर कितना सुंदर भव्य मंदिर है। गुरु महाराज को उन्होंने बोला कि यहाँ पे दिल्ली में तो 1 दर्जन मंदिर होने चाहिए। प्रभु पहला जो मंदिर बना है ना, राधा पार्थ, खून पसीना एक हो गया वो बनाने में, वो इम्पॉसिबल था वो मंदिर बनना, लेकिन आज 18 मंदिर खड़े हो गए दिल्ली में। क्यों? प्रभुपाद ने बोला कि कैपिटल है, यहाँ पे 1 दर्जन मंदिर तो होने चाहिए। जुहू मंदिर मिलने ही नहीं वाला था, खत्म था, लास्ट मोमेंट में बाला साहेब ठाकरे आ गए और उन्होंने बचा दिया भक्तों को, नहीं तो खत्म था, मिलना ही नहीं था हमको। अगर उसका स्ट्रगल आप देखो तो प्रभुपाद दूरदर्शी है, उनको पता है। और जो भी इस्कॉन मूवमेंट में आ रहा है, लोग भले ना समझे, लेकिन एक एक जो वास्तव में, देखिए अलग अलग भाव से लोग आते हैं, कोई आता है पैसे कमाने, कोई आता है यहाँ पे पाखंड करने, कोई अलग अलग भाव से आता है, लेकिन इसमें भी कितने लोग होते हैं जो उनका हार्ट ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो ये न कि इन प्रकार आप कैसे भी घुस गए, किसी भी इस्कॉन के जो प्रामाणिक गुरु हैं, आप उनसे अगर दीक्षा ले लिए यहाँ पे आके, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपके लिए स्पेशल मीटिंग बैठती है वहां पे धाम में, वैकुंठ में, कि अब इनको किस तरीके से हम वापस लाए यहाँ पे। ठीक है, तो अगर प्रभुपाद बोलते हैं तो वो बिल्कुल पॉसिबल है। आप मतलब आप देखिएगा आपके जीवन में खुद आप आगे जब बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, अनुभव होगा इसका। ठीक है। और प्रभु एक और चीज थी, मतलब मैं रिसेंटली एक डिवोटी से बोल रहा था, वो आए थे आप बदली, एंड ही स्टेज इन वृंदावन। ओके, वो वहाँ पे ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं, एंड ही गेट्स अपॉर्चुनिटी टू सर्व ऑल द महाराज व्हेनेवर महाराज कम्स टू यूरोप टूर, सो ही इज देयर सर्वेंट, काइंड ऑफ, उनको सब मैसेज करेंगे, उनका डाइट बताएंगे वो। तो वो मुझे बोले, और वो बचपन से वहां से, सो ही इज एक्चुअली ब्रिटिश, इंडियन ब्रिटिश, बट ही स्टेज ओवर देयर बचपन से, उनके माता पिता को। सो ही गॉट अपॉर्चुनिटी टू एसोसिएट विद डिवोटीज हु वर क्लोज टू आइंदर प्रभु, एंड सच ग्रेट डिवोटीज। एंड ही सेड मी once one thing that he was discussing Bhagavatam 10th canto, and he said to me that we were all sitting devotees at night at 1 a.m. and he said us one thing that, all of this that we are seeing this, you, me, we are interacting, we are talking about this devotee, that devotee and all, this is all just a dream, this is not reality. Right. And that we ourselves are actually dreaming right now in Vaikuntha Dham or somewhere else. And this, we are part of Vishnu's big dream that is going on right now. भागवतम का एक श्लोक है, वो शेयर भी किया था वेदस लोगों ने, रिमेम्बर। तो मुझे जो बताया गया है वो यही है कि अभी मैं और आप यहाँ नहीं है भौतिक जगत में, हम अभी भी गोलोक वृंदावन धाम नहीं, अभी भी, राइट। इट्स जस्ट दैट वी आर इनसाइड, जैसे होता है ना कि वीडियो गेम के अंदर घुस गए, मेल फंक्शन हो गया, और वीडियो गेम के अंदर कोई वायरस आ गया, उसमें हम घुसे हैं, लेकिन अभी निकले नहीं है, वीडियो गेम के अंदर ही है। जब गेम खत्म होगा तो हम निकलेंगे वहां से, राइट। सो स्टिल यू एंड आई आर इन गोलोक वृंदावन धाम आज भी। सही बात है, ये भागवतम का श्लोक है 4th स्कंद का, कि हम लोग महाविष्णु का जो स्वप्न है उसमें। लेकिन अब क्या होता है कि इसको रियलाइज किया जा सकता है, इसको बोल के नहीं समझा जा सकता। ठीक है, क्योंकि यदि आप इसको बोलोगे तो फिर ये चला जाएगा कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। ठीक है, जो मायावादी बोलते हैं कि सिर्फ ब्रह्म सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, बाकी कुछ नहीं है, सब स्वप्न है, ये सपना चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सपना नहीं चल रहा है। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ये वाकई में हो रहा है। मैं जाके जो भी गलत काम करूंगा वो वाकई में मुझे उसका भुगतान मिलेगा, मतलब सपना तो नहीं है ये सही बात है। ठीक है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड, तभी मैं बोल रहा हूँ इसको रियलाइज ही किया जा सकता है, इसको शब्दों में मैं नहीं बता सकता हूँ कि स्टिल यू एंड आई एज पर सीनियर डिवोटी, जब मैंने ज्वाइन किया तो उन्होंने मुझे जो समझाया तो वो यही था कि हम आज भी गोलोक वृंदावन धाम में, हम वहां से कहीं निकले ही नहीं, धाम से हम कभी बाहर नहीं निकले, वी आर देयर। इट्स जस्ट कि हमारे अंदर जो भी भगवान को लेके ईर्ष्या आ गई थी, भगवान को लेके गलत कामना आ गई थी कि वी ऑल्सो वांट टू बी एंजॉय, उसके वजह से हमको एक माया जाल में डाल दिया गया, एक इल्यूजन में डाल दिया गया। जैसे मैंने वो जो मूवी देखी थी मैट्रिक्स, ओके, एक मूवी, अगर आपने देखी कि नहीं,
उसमें क्या होता है कि वो कंप्यूटर में बैठ के एक चिप लगा देते हैं उनके पीछे, ओके, और उस चिप के थ्रू वो सपने में जाके पूरा गेम खेलते हैं मैट्रिक्स का, ओके। सो इट इज काइंड ऑफ, मतलब अगर मैं दिमाग लगाऊं, मुझे लगता है उन लोगों ने भी शास्त्र पढ़ के ही बनाए हैं, क्योंकि मैंने बताया ना, अस्तमा सदगमयो ज्योतिर्मा, वो दुर्गा माँ का वो श्लोक बोल रहे थे, बिकॉज दे हैव स्टडीड स्क्रिप्चर्स, उसके बाद ही बनाया उन्होंने वो मूवी। So similarly, Prabhuji, it is something like that. But yeah, only when we realize it. जैसे अब मैं इसलिए क्यों बोलता हूँ कन्विक्शन से, कि जब आप मार्कंडेय मुनि का पढ़ते हो 11th स्कंद में, ठीक है, तो मार्कंडेय मुनि ने जब तपस्या की और कृष्ण भगवान उनके सामने बाल स्वरूप में बांसुरी बजाते हुए आए, तो मुस्कुरा के पूछा भगवान ने कि आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बोल दिया कि भगवान, मैंने माया के बारे में बहुत सुना है लेकिन कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो मुझे उसकी झलक देखनी है। तो कृष्ण मुस्कुराए, सार्कास्टिकली मुस्कुराए कि ये क्या मांग लिया आपने। और उसके बाद उन्होंने जैसे ही तथास्तु बोला, मार्कंडेय मुनि जो थे वो करोड़ों करोड़ों जन्मों के लिए माया में पड़ गए, करोड़ों जन्मों के लिए उन्होंने सब कुछ देखा, सब कुछ उस करोड़ों जन्मों में, और लास्ट में उन्होंने देखा जगन्नाथपुरी, और पूरा प्रलय आ गया, सब कुछ संसार डूब गया, सब कुछ हो गया, बस जगन्नाथपुरी बचा था। वहां पर वो किसी तरीके से गए और जगन्नाथ जी की पूजा करके जैसे ही उन्होंने अपनी आंख खोली, किसने, मार्कंडेय मुनि ने, तो उन्होंने देखा कि वो अभी भी उधर ही बैठे हैं कृष्ण के सामने, और ये सब जो भी उन्होंने करोड़ों अरबों जन्म में देखा, जो उनके साथ घटित हुआ अभी, वो सिर्फ और सिर्फ एक, लाइक जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ 1 सेकंड में उन्होंने करोड़ों जन्म घूम लिया है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान से उन्होंने बोला था कि मुझे माया का दर्शन कराइए। अगर हम उसको अपने से रिलेट करें, देन दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग विद अस, कि है तो वहीं पर, जैसे मार्कंडेय मुनि थे वहीं पर कृष्ण के सामने, कृष्ण बांसुरी ही बजा रहे हैं, लेकिन बिकॉज वी डिजायर्ड कि हमको एक ऐसे जगत में भेजा जाए जहां पर हम पुरुष होंगे, वी विल बी द मैन ऑफ द फैमिली, राइट। आज यही कर रहे हैं ना हम लोग, हम मास्टर बन रहे हैं, मास्टर एमबीए बन रहे हैं, एमबीबीएस बन रहे हैं, सब मास्टर डिग्री है ना, लेकिन हमको बनना सर्वेंट है, तो यहाँ पे हम गलत जगह उल्टे घुस गए आगे स्पिरिचुअल मटेरियल वर्ल्ड में। लेकिन जब आंखें खुलेगी, मीनिंग जब ये जो फॉल्स ईगो है जिस दिन खत्म हो जाएगा, कवरिंग जब हट जाएगी, तो हमको पता चलेगा कि 1 सेकंड में ही ये पूरे हम भी करोड़ों जन्म घूम चुके हैं 84 लाख योनियों में, और हैं हम वहीं पर अभी भी गोलोक वृंदावन धाम में। तो प्रभु एक और चीज भी है कि कुछ महाराज जो है अपने परंपरा में वो बोलते हैं कि दिस इज नॉट ट्रू दैट वी हैव केम फ्रॉम गोलोक वृंदावन, एंड सम से कि हाँ हम वहां से आए हैं। और मैंने गोविंद महाराज का भी एक लेक्चर सुना था, उन्होंने वो बोलते कि नो, वी डिड नॉट कम फ्रॉम गोलोक वृंदावन। तो अब ये 2 अलग अलग मत हैं, और इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज कुछ होने नहीं वाला है उससे। एक बोलते कि हम धाम से आए थे, दूसरे बोलते कि हम अगर धाम से आए थे तो हम गिरे कैसे थे। तो ये पॉसिबल नहीं, और इसका आंसर ना प्रभुपाद ने दिया है, ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दिया। उन्होंने बस बोला कि आप जाके पूछो कृष्णा से कि एग्जैक्टली आप कहाँ से आए थे, राइट। दूसरे बोलते कि हम वहां पे कहीं नहीं थे, हम स्टार्टिंग जब हमारा हुआ तो हम महाविष्णु के स्वाद से हमारा प्राकट्य हुआ, और उसके बाद हम आज तक पेंडुलम की तरह घूम रहे हैं कि हम मटेरियल वर्ल्ड में ही घूम रहे हैं, हम आज तक स्पिरिचुअल वर्ल्ड कभी नहीं जा पाए। दिस इज वन थियरी। सेकेंड थियरी इज कि हम गोलोक वृंदावन धाम के हैं और धाम में थे, वहां से हमारा पतन हुआ, हम इस भौतिक संसार में आ गए और हम वापस वहां पे जाएंगे। अब ये वाले लोग तर्क क्या देते हैं कि जब भगवान बोलते हैं 15.7 में, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, कि एक बार जो मेरे धाम में आ जाता है वो कभी भी वापस नहीं जाएगा इस धाम पर। ये कैसे पॉसिबल हो गया कि हम चले आए, राइट। अब उसका काउंटर एक्ट यह है कि जय विजय भी तो वैकुंठ के थे, लेकिन वो भी तो आ गए, रावण कुंभकर्ण बन के, शिशुपाल दंत वक्र बन के, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बन के, तो पॉसिबल तो है कि वहां से आ सकते हैं, लेकिन लीला के रूप में आ सकते हैं। और दूसरी बात ये रही कि प्रभुपाद ने बोला कि गोपीज कैन ऑल्सो फॉल डाउन, जो गोपियां हैं उनका भी पतन हो सकता है, बट कृष्णा विल नेवर लेट दैट हैपन। चांसेस है क्योंकि वहां पर भी फ्री विल है हमारा भौतिक आध्यात्मिक संसार में, लेकिन कृष्ण कभी होने नहीं देते, राइट। अब इस पे डिबेट करने का कोई मतलब है नहीं। आप, और मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि आप एक मानो या दूसरा मत मानो, जो भी ऐसा है, एंड गोल सिंपल है कि हमको धाम वापस जाना है, दैट्स इट। ये इनके इन प्रकार है, ठीक है ना। तो जब हम धाम जाएंगे तब हम उस ड्रीम में से बाहर निकलेंगे। यस, तो अब ये जो ड्रीम का जो सिचुएशन है,
देखिए अब वही है, जब हम 5th कैंटो पढ़ेंगे भागवतम का तब ये चीज बहुत क्लियर हो, ठीक है। तो अभी पहले हम उसको एकदम सिस्टमेटिक जाते हैं, समझते हैं बहुत डीपली और रियलाइज करते हैं, क्योंकि ये जो चीज है ना ड्रीम वाला प्रभु जी, ये बोल के नहीं होगा, ये रियलाइज करके होगा। जब तक आप रियलाइज नहीं करेंगे ना भागवतम को, तभी मैं बोल रहा हूँ कि भागवतम तो अभी हम लोग मतलब समझे ही नहीं है। भागवतम क्या, भगवत गीता भी 1% ही समझे हैं, राइट। भागवतम इज लाइक हनी, नेक्टर है। हम बैठने 5-5 10-10 घंटे प्रभु जी क्लास चलती है भागवतम पे। जब जब आप अगर मेरे जगह राधा गोविंद महाराज बैठ के क्लास दे रहे थे, आप 10 घंटे बैठे रहते कि महाराज उठना ही नहीं है, बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए, राइट। क्योंकि अभी हमको वो स्वाद नहीं आया अभी भागवतम का हमारे अंदर, बट आएगा, एक दिन आएगा जरूर, अगर हम प्रयास करते रहेंगे। बोला ना मर्सी, जिस दिन मिलेगी तो वो भी आएगा हमारे अंदर से, राइट। और प्रभु भागवतम में भी तो षट संदर्भ है, फिर भागवत अमृत लीला है। नहीं, भागवतम में षट संदर्भ नहीं है। षट संदर्भ इज अ प्रोसेस टू अंडरस्टैंड अ भागवतम, ठीक है। जो पूरी भागवतम है उसको 6 अलग अलग कैटेगरी में जीव गोस्वामी ने कैटेगराइज किया है, 6 अलग अलग ग्रंथों में, ठीक है। तो प्रीति संदर्भ है, कृष्ण संदर्भ है, परमात्मा संदर्भ है, भगवत संदर्भ है, तत्व संदर्भ है। तो अब इसमें क्या है ना कि कृष्ण संदर्भ में उन्होंने क्या किया कि भागवतम से जितना भी कृष्ण भगवान के बारे में बोला गया है वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण संदर्भ में, ठीक है। भागवतम से जितना भी परमात्मा के बारे में बोला गया है वो परमात्मा भगवान संदर्भ में है, ऐसा किया है। और उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया है, एक क्रम संदर्भ लिखा है। क्रम संदर्भ मतलब कि वो पूरी भागवतम सीक्वेंस में लिखी है, बट उन्होंने अपना तात्पर्य दिया है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइए इन दोनों चीजों में, ठीक है। हरे कृष्ण। यस कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सो वन लाइक थियोरिटिकल अंडरस्टैंडिंग तो ठीक है, बट प्रभु जी उसको रियलाइजेशन में लाते कैसे हैं? हाँ, तो हाउ डू वी डू दैट? जी, तो रियलाइजेशन में इसलिए नहीं आ रहा है माता जी, जो मैंने 7.28 वर्ष क्यों दिखाया, इसलिए दिखाया कि अभी क्या हो रहा है ना कि शहद है, ठीक है। शहद तो है मीठा, सब लोग बोल रहे हैं कि शहद मीठा है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि यार मैं तो जब शहद चखती हूँ तो मिठास आती नहीं। क्यों नहीं आती है? क्योंकि आप बोतल खोल के नहीं चख रहे हैं उसको, ठीक है। तो अभी हम जो नाम ले रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, भागवतम क्लास कर रहे हैं, अभी दिक्कत क्या हो रही है ना कि हमारे पीछे के बहुत पाप हैं। हमको ना वो मिल गया है, क्या बोलते हैं, वीआईपी पास मिल गया है, एंड दैट इज गुड एक्चुअली, बहुत अच्छा हो रहा है हमारे साथ। हमको जो लाइन लगती है ना, जैसे तिरुपति बालाजी में आप जाएंगे तो 4-4 5-5 घंटे लाइन में खड़े होते हैं और फिर भगवान का बस 10 सेकंड के लिए दर्शन मिलते हैं बालाजी के, राइट। हमको क्या है ना, वीआईपी पास मिल गया है अभी। हम उस लाइन को सीधे कट करके सीधे यहाँ पर आकर बैठ गए जहाँ पे हम 16 माला कर रहे हैं, जहाँ पर हम मंगल आरती कर रहे हैं, जहाँ हम डिजर्व नहीं करते हैं हमारा कि हमको बैठ के इतना, हमारे लिए ये दिस इज लाइक अ जैकपॉट, हमको जैकपॉट मिल गया है कि ये बैठ के आयरलैंड में बैठ के ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो अभी क्या हो रहा है कि बॉटल तो मिल गई है हनी की, क्योंकि हम देरी कर रहे हैं, बट हमारे जो पिछले जो पाप थे अभी भी कहीं ना कहीं वो प्रवृत्ति है। जैसे मैंने बोला पाप तो खत्म हो गए, लेकिन वो पाप करने का बीज अभी भी हमारे अंदर है। उससे क्या हो रहा है कि हम जो साधना अभी कर रहे हैं वो उतना मन लगा के नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा जब हम जप कर रहे होंगे तो हमको मन करेगा कि और जप करें, हम उठे ही नहीं आज। कंपन होगा, बहुत अलग सी एक फीलिंग आएगी। वो दिन आएगा जब हम भागवतम पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, अश्रुधारा बहने लग जाएगी और लगेगा कि बस हम पहुंच गए अभी वहां पे, हमारे सामने ही हो रहा है ये सब कुछ। वो स्थिति आएगी हमारी। जब वो स्थिति आएगी माता जी, तब समझ लेना आपके पीछे के सारे पाप खत्म है, हम कोई वैष्णव अपराध नहीं कर रहे हैं और भगवान साक्षात हमारे साथ बैठे हुए हैं और हमारे साथ सुन रहे हैं वो सब कुछ, ठीक है। तो क्यों नहीं हो पा रहे अभी? क्योंकि हमारे पिछले बहुत सारे कर्म हैं जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं और ऊपर से हम उतना जोर नहीं लगा रहे जितना हमको लगाना चाहिए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु डेली लाइन से 100 बार ध्रुव चरित्र पढ़ते थे। मैं समझ नहीं पाता था कि ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र ये दोनों बार बार पढ़ते थे। क्यों पढ़ते थे पता है? क्योंकि जो ध्रुव चरित्र है उसमें है कि एक 5 साल का बालक इतना डिटरमिन्ड है कि उसको भगवान चाहिए कि वो पूरी दुनिया को तहस नहस करने के लिए रेडी है। 5 साल का बच्चा बोलता है कि मैं प्राप्ति करके रहूंगा नारायण की, सब कुछ छोड़ दिया, खाना पीना सोना उठना, यहाँ तक कि गुरु आए नारद मुनि, उनको ही बोला कि अगर भगवत प्राप्ति करा सकते हैं महाराज तो करवाइए, नहीं तो मेरे रास्ते से निकलिए आप।
ये डिटर्मिनेशन हमको चाहिए। इसलिए महाप्रभु डेली सुन रहे हैं, हमको सिखाने के लिए कि देखो, अगर तुमको चाहिए कि भगवत प्राप्ति हो तो ये डिटर्मिनेशन चाहिए कि बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए। अर्जुन की तरह सीधे मछली की आंख में लक्ष्य दिखनी चाहिए तुमको कि कृष्ण ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अभी वो आया नहीं ना हमारे अंदर, हम बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि नहीं, ये भी देखना है, ये भी देखना है, फिर घर संसार है, फिर जॉब है, फिर ये है, फिर वो है, राइट। बट स्लोली स्लोली स्लोली, जैसे कि विष्णु माता जी का क्वेश्चन था कि हम नहीं कर सकते हैं, ये भगवान का ही हमको जब ऊपर से मर्सी फ्लो होगी तब होगा। लेकिन हमें क्या करना है, अपने तरफ से हमको प्रयासरत रहना है, हमको फुल अपना एंडेवर करना है, तब उनकी मर्सी मिलेगी। और जब मर्सी मिलेगी तब आप आस्वादन करेंगे इस चीज का। ठीक है प्रभु जी, एक चीज और पूछूं? जी। लाइक प्रभु जी, मतलब फीलिंग आता है कि करना है करना है करना है, पर मन कंट्रोल में नहीं आता है। मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चले जाता है थॉट, लाइक पता नहीं माला करने से भागने का क्यों, समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। So that फीलिंग is a है good पर thing. फिर भी भागते हैं, समझ नहीं आता क्यों। दैट इज अ गुड थिंग माता जी। इसका मतलब कि वो काम कर रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए कि कोई चोर है और वो चोर जो है वो पुलिस को देख के अगर भाग रहा है तो अच्छी बात है ना। इसका मतलब कि पुलिस का खौफ है। तो जो ये मन है, जब माला पकड़े हैं और वो भाग रहा है तो अच्छी बात है। वो स्टार्टिंग में भागेगा ही, क्यों भागेगा? क्योंकि अंदर की जितनी गंदगी है ना वो भाग रही है। जब हम चैंटिंग करते हैं ना, तो चैंटिंग करने समय आप देखेंगे बड़े अतरंगी थॉट्स आएंगे आपको, ऐसे थॉट्स जिसकी तो कल्पना भी कोई डायरेक्टर नहीं कर सकते अपनी मूवी में। वैसे वैसे, अब आपका नहीं पता, मुझे तो आते हैं ऐसे कि मैं आराम से हजारों मूवी बना दूं मैं डायरेक्ट करके। लेकिन वो क्यों हो रहा है ऐसा? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कई जन्म से कई संस्कार घर बनाकर बैठे हैं हमारे दिमाग में। और जब हम चैंटिंग कर रहे हैं तो भाग रहे हैं वहां से, वो निकल रहे हैं। तब जब वो निकल रहे हैं, अब आप देखें कि हम देखते हैं ना कि जो भक्ति में नहीं आते हैं वो तो कितने कूल हैं, मस्त हैं। वो ना गुस्सा करते हैं, ना किसी से उनका कुछ कहा सुनी होता है, वो मस्त है अपने लाइफ में। लोग बोलते हैं अरे ये कृष्ण भक्त से तो अच्छे ये हैं, यहाँ जाओ ये पॉलिटिक्स, ये बोल रहे हैं, उनको वो बोल रहे हैं, इससे अच्छा तो बाहर की दुनिया, भैया बाहर हो, मंदिर में मत जाओ। अरे वो मूर्खता है। वो जो बाहर है ना वो तो अभी खेल में आया ही नहीं है, राइट। क्योंकि जब आप चैंटिंग करते हो तो अंदर की जितनी भी गंदगी है, जितना भी पाप जो बैठा हुआ था ना एक जगह पे कोना करके, और एकदम जिद्दी पाप जिसको बोलते हैं ना कि एकदम खरोच खरोच के निकालो, वैसा वाला पाप, वो अब निकल रहा है जब हम चैंटिंग कर रहे हैं। और वो जो नॉन डिवोटी है उसको तो पता भी नहीं है कि उसके अंदर वो बैठा है। उसको तो पता चलेगा माता जी, आप जिस इमोशन से आज गुजर रहे हैं, जो मैं गुजर रहा हूं ना, इस संसार का हर एक व्यक्ति वो झेलेगा जब वो चैंटिंग करने बैठेगा। तो इट्स गुड कि हम आगे हैं, वी आर अहेड ऑफ देम, बस इतना ही फर्क है। बट दे हैव टू कम टू दिस स्टेज नाउ, और बाद में कभी भी, ठीक है। तो ये सारी चीजें निकल रही है माता जी, और जब ये निकलेंगी, अब जैसे हम रुमाल बांध के झाड़ू लगाना चाहते हैं तो क्या होगा कि धूल तो उड़ेगा ही ना। तो लेकिन जब धूल उड़ेगा तो हम ये थोड़ी बोलते हैं कि अब छोड़ दो भैया, धूल है तो हम साफ नहीं करते, नहीं। धूल उड़ेगा मतलब कि और स्पीड से सफाई करो, क्योंकि करते 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 क्या होगा, वो जाएगा। ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, वन ऑफ माई फेवरेट पास टाइम है समुद्र मंथन। जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले क्या निकला था? जहर निकला था, ठीक है ना। जब हम चैंटिंग करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं पता है? हम मंथन कर रहे हैं। मंथन मतलब कि अपने मन को हम मथ रहे हैं। जब हम मन को मथते हैं ना माता जी, तो सबसे पहले जहर निकलता है हमारे अंदर। मतलब क्या है कि जो डिवोटी होगा ना, आप देखिएगा गुस्सा बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। पहले जो शांत था वो अब अटपटांग हरकतें करने लगता है। क्यों कर रहा है वो? क्योंकि जहर निकल रहा है। और ये अच्छी बात है कि जहर अंदर से बाहर निकल रहा है उसका, ठीक है। एक बार जब जहर बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा? अमृत बचेगा। जैसे भागवतम में बोला जाता है कि एक पॉट है, उसके अंदर जहर है, आप उस जहर को कैसे निकालेंगे? आप उस जहर को ऐसे निकालेंगे कि आप उसमें अमृत डालिए, डालिए, डालते जाइए, डालते जाइए। जहर ओवरफ्लो होते 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 कुछ घंटों बाद क्या होगा? पूरा जहर निकल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अमृत बच जाएगा, राइट। उसी तरीके से हमारे अंदर तो जहर भरा हुआ है अभी। कितने सीरियल देखें, कितने मूवी देखें, कितनी गालियां अंदर बैठी हुई हैं हमारे, कितनी सारी कुकर्म हमारे अंदर बैठे हैं। अब जब हम नेक्टर अमृत ले रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वो जहर निकल रहा है, वो गुस्सा निकल रहा है, वो पाप करने की प्रवृत्ति निकल रही है।
और तो हमको घबराना नहीं है माता जी, हमको डरना नहीं है। जितने भी थॉट्स आ रहे हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही है, आने दो। लोग जज कर रहे हैं, करने दो कि ये माता जी तो बहुत गुस्से वाली है, तो बहुत चिड़चिड़े प्रभु जी, कोई बात नहीं, होने दो। एक समय आएगा, 10 साल 50 साल जो भी है, उसके बाद आप देखोगे पूरा जहर निकल जाएगा, शांत हो रही। इस जन्म में नहीं तो आगे के जन्म में तो करना पड़ेगा, करना तो है। वी हैव टू गो थ्रू द स्टेज, ठीक है ना। तो ये होगा, बट दिस इज द प्रोसेस। अब आप समझ लीजिए कि आप किस स्टेज पर हैं उस प्रोसेस पे, कितना जहर निकल रहा है, कितनी गंदगी और कितना मन भाग रहा है। इसका मतलब कि अभी आप उस स्टेज पर हैं, ठीक है। बट दिस इज गुड, दिस इज प्रोग्रेस। ओके, यस, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, विश्वा माता जी। प्रभु जी, एक जो एक ये भी मान्यता है कि कृष्ण को अगर वी वांट टू अचीव कृष्ण तो राधा रानी प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल, लाइक वृंदावन में ऐसे कहते हैं कि I mean, we have to approach Right. Radha Rani if we want Krishna, if we want to Right. reach up to Krishna. But अगर कोई भक्त राधा रानी की तरफ वो भावना आती ही ना हो, खाली कृष्ण के प्रति ही वो भावना आती हो, so is that भावना okay? We are falling somewhere behind like that. ओके, तो सी, उस भावना में कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि कृष्ण की तरफ आते, लेकिन ऐसा कोई भी पूरे संसार में नहीं है जिसको राधा रानी की तरफ भावना नहीं आएगी। इट मीन्स कि आप अभी स्टार्टिंग है भक्ति में, ठीक है। क्योंकि मेरी प्रेयर कृष्ण तक कैसे पहुंचती है आपको पता है। मैं डायरेक्टली जाके कृष्ण से बात करने के लायक नहीं हूँ, या फिर जो मैं डीटी वर्शिप डेली से मंगल आरती में करता हूँ, मैं कृष्ण तक नहीं पहुंचा सकता हूँ। ना अगरबत्ती पहुंचा सकता हूँ, ना फूल, ना चामर, ना मोर पंख, कुछ नहीं। कैसे पहुंचता है, मैं मेरे गुरु को पहुंचाता हूँ, ठीक है। मैं मेरे गुरु को बोलता हूँ, मेरे गुरु अपने गुरु को बोलते हैं प्रभुपाद को, प्रभुपाद अपने गुरु को बोलते हैं, वो षड गोस्वामी को बोलते हैं, षड गोस्वामी जाते हैं नित्यानंद प्रभु के पास, नित्यानंद प्रभु वो फूल लेके देते हैं चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु वो फूल देते हैं मंजरियों, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वाकई में राधा रानी है। तो आप ऐसे समझ लें कि जो षड गोस्वामी है वो आ गई मंजरी, मंजरिया वो फूल देती है ललिता विशाखा को, और ललिता विशाखा वो फूल देती है राधा रानी को, और राधा रानी वो फूल देती है कृष्ण को, ठीक है। तो ये हुआ मेरा विषय। इस तरीके से मैं कुछ भी दे रहा हूं कृष्ण को, ठीक है। मैं डायरेक्टली नहीं दे सकता हूं। तो अगर आप, मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी। हाँ, ओके, हाँ। तो यदि आप अभी उस स्टेज पर नहीं है कि आपको राधा रानी से अगर स्नेह नहीं है, तो इतना मान के रखिए कि आगे जरूर होगा, ठीक है। वो निश्चित है, क्योंकि राधा रानी के थ्रू। अभी के लिए there is nothing wrong if I don't have those spiritual feelings towards राधा रानी, मतलब कुछ गलत नहीं होता है ना मेरे जिंदगी। नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज इम्पॉसिबल कि वो नहीं आएगा, वो आएगा। इट्स जस्ट दैट कि हम अलग अलग स्टेज में है लाइफ के, राइट। ओके जी हाँ, मतलब वो जरूरी है फॉर आवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। राधा रानी से भेंट मतलब राधा रानी की तरफ आपकी अर्जी कृष्ण तक राधा रानी ही पहुंचा सकती हैं, डायरेक्टली नहीं। देखिए अब ये जो बात हो रही है ना, ये बहुत हाई लेवल की बात है, ठीक है। इसमें मैंने ज्यादा नहीं घुसूंगा, क्योंकि अलग अलग गुट है गोपियों का, ठीक है। जो हम मंजरी भाव में आते हैं, राधा रानी के भक्त, हमारे आराध्य कृष्ण नहीं है, राधा रानी है। अब कुछ होते हैं जो गोप भाव में है, जो कृष्ण के सखा गण हैं, ठीक है। तो उनका रुझान कृष्ण की तरफ होगा, बट वो रुझान भी ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आप पहुंच जाएंगे वहां पे, नहीं। दैट ऑल्सो गोज बाय राधा रानी एंड बलराम जी, नित्यानंद प्रभु, ठीक है जी, ऐसा है। यस, हाँ, चैतन्य प्रभु। प्रभु जी, अभी आप ये कह रहे थे ना कि वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। तो एक्चुअली कल एक अच्छी वाले दिन मैं चैटिंग कर रहा था, मेरे दिमाग में भी ऐसे ही आ रहा था। मतलब आई थिंक थोड़ा स्ट्रेंज थॉट है, बट ऐसे फीलिंग आ रही थी कि यस, वी आर द मिसिंग रेजिडेंट्स ऑफ गोलोक वृंदावन। और जब आउट ऑफ कंपैशन प्रभुपाद पूछते हैं कि कौन हेल्प करेगा मेरी, तो सब बहुत एक्साइटेड होकर हाथ रेस करते हैं अपना, हमारे सब जो इस्कॉन के गुरुजन है, कि वी वांट टू गो हेल्प देम कम बैक। बहुत एक्साइटेडली वो आ रखे हैं, तो वी हैव टू टेक देयर एसोसिएशन। तो ऐसा मेरे को वियर्ड से थॉट्स आ रहे थे। इट्स नॉट वियर्ड, इट्स एक्चुअली ऐसा ही है। प्रभुपाद ने बताओ क्या बोला है। प्रभुपाद ने बोला है कि गोलोक वृंदावन धाम में भी एक इस्कॉन है, और हम सब लोग उधर के ही हैं। मतलब अभी मैं जाऊंगा तो हम लोग वहां पे अड़ोस पड़ोस में ही रहेंगे इटरनली, राइट।
सो इट इज दिस बॉन्ड इज इटर्नल बॉन्ड एक्चुअली। ये ऐसा नहीं है कि ये जन्म में खत्म, फिर नहीं, वापस से घूम फिर के एक साथ ही जाना है ऊपर धाम सबको। इसलिए वी हैव टू पुल ईच अदर अप। साधु संघ में यही करना है हमने, क्योंकि प्रभुपाद बोल कर गए भैया हमें, वो जन्म जन्म यही है ना कि चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से ही, कि एक जन्म का ये नहीं है, ये जन्मे जन्मे प्रभु से ही। जब तक धाम नहीं पकड़ेंगे, कान पकड़ के हाथ पकड़ के, वो घसीट के ले जाएंगे हमको। सो ही विल कीप सेंडिंग समवन। अब हम जल्दी चले गए तो चले गए, नहीं तो फिर वेट करते रहो, वो भेजते जाएंगे, हम वेट करेंगे, वो भेजते जाएंगे, ऐसा रहेगा। सो या प्रभु जी, नॉट वियर्ड थॉट, इट्स अ वंडरफुल थॉट। थैंक यू। यस अमित प्रभु। तो प्रभु गलती से रह गए। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके चलो फिर ठीक है। अब नेक्स्ट इज रथ यात्रा, जो कि है संडे की, तो उसमें मिलेंगे। एंड देन उसके बाद आई कीप अपडेटिंग ऑन द ग्रुप, जो भी है महाराज के लिए कुछ गुरुमुख प्रभु कुछ बोलना है आपको? प्रभु जी ज्यादा बोलना है, बोलो। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। प्रभु जी आपकी सारी बातें ठीक है जी। बातें एक बात पे जो लास्ट